कल कुछ हुआ? नहीं निकल तो ये कल पता नहीं क्या मेरा हाथ लग गया उसके अचानक और मेरा भी हाथ लग गया था परसों। मुझे लगा था मैं देखो मतलब क्रेडिट कहाँ से आ गई मैंने तो माइनस 200 हो गए नहीं वो बहुत नहीं तो मार्क्स पर रखो कभी भी बहुत आपको स्पाइक ही नहीं नजर आएगी, इतनी बड़ी स्पाइक थी, 930 से गई वो। दोनों आप देखिएगा कि हाँ जी पूरे 8.5 नहीं उससे की बिल्कुल 112 एरिया कल वाला हिट हो गया सी। All right, YouTube links are updated, everything is good. We should be live shortly. We are live February 7th. Good. This is live. YouTube, Instagram, TikTok. Everything is live. All right. Because of the non-farm, today will be exciting, and Amazon earnings last night. So let's see which way Nasdaq wants to go. Almost went to 22,900. So the spike that I saw, let's look at the areas. If Friday areas tab, please. They are updated. So 22,500. Finally, we're seeing this number. So that all-time high is 22,450. So non-farm today is base is up, pressure is down, still pressure is down. Strike price becomes 530. All right. Good morning, everybody. Friday, February 7th, 8:58 a.m. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com, wherever you guys are joining us here. My mic should be okay. Yep, it's all good. Let's take a look at Forex Factory first. Quickly news. Your news is saying non-farm. First Friday of the month, options expiry, so non-farm, and margins were increased, and we are good to go. So we can hear at Super Areas, we ask you to stay disciplined and pray for your success every single day. Where are we? So night high, because of the 836, 21,930 is what I recorded on my computer exactly, and my 21,790. 21,790. So the jump has been 140 points from Nasdaq. So that becomes your R1 and S1, 100% in that range. I would not take R1, S1 personally, maybe a little higher, because Amazon earnings were somewhat good, except we had a discussion quickly. I didn't read the full earnings report. Let's look at Amazon stock price. What else? Today, no major earnings, no trillion-dollar company. When do we worry? 26th of February, NVIDIA, 26th of February. So that's the really, I know somebody's trading Baba. So that's on 20th February. So we'll worry about that later. So let's open up the charts. Areas are done. Areas are plotted. You guys can take advantage of this. And welcome to online as well as in person. Let me do a cam check on all of them. So cam 1, personal cam, screen cam, board cam, and classroom cam. This is from this is from Matheson office. Soon we'll have a live stream there. So all right, so that is good.
Tomorrow I'll be recording English lecture number 3. Tomorrow, and then Sunday number 4, and that will complete our brand new 4K recording, because the last recordings were done right after COVID. So this is a fresh recording. Hindi series were long time done. And then after this session of English, we'll do the psychology class and a couple of other things. All right, ES. Where are we, ES, Vikram bhai? What is it saying? 611 15 ऊपर और 84 नीचे, ठीक है. तो वही R1 S1 बन गया, ठीक है. और मिड बेस ऊपर है, 6099 से ऊपर है, तो इसका चांसेस आर के इसने ऊपर ही जाना है. बेस अप तो प्रेशर अगर डाउन है ना तो स्टे इन शॉर्ट, कि अगर मिड बैंड है ना लॉन्ग वाले ना लेना, ले सकते हो, लेकिन मोर चांसेस है कि किसी भी वेले प्राइस ने गिर सकती है. नहीं, लेकिन अगर लेना है ना एरिया, तो जेडी रेजिस्टेंस जोन है ना वो ज्यादा पावरफुल है अगर प्रेशर डाउन है. बेस अप ते 930 का ट्रेड है, 930 पे आएगी. अगर ये खुली अराउंड इसी प्राइस पे तो चांसेस आ रही है 6115 तक जाएगी. ये बेस अप कह रही है. हो गया. मैं S1R1 को बंद ही कर रहा हूँ. मैं कोई एस वाली लेता ही नहीं, आपको पता है. आजकल तो एस तो है ही नहीं है. एस हुई तो एक्सपेक्टेड लो है, आर हुई तो R2. मैं सिर्फ गैप देखना है. एक सेकेंड सर. 17 से हमारा मैं गाड़ी में था तो मैं लिया नहीं. कल मैंने लिया, कल पूरा दिन बैठे रहे. कल शाम को नैस्डैक आई S1, वो नहीं लिया, R1 ले लिया. अच्छा, गोल्ड तो टू द डॉट चला है. सारे गोल्ड वाले हंस रहे थे कल. तो अब मैंने यहाँ लगाए हैं क्रूड ऑयल भी, गोल्ड भी, कि जिस दिन कुछ हो कहीं और किसी और दुकान में घुस जाए यार. तो R2 अगर हुआ ना, एक सेकेंड अभी सिंक कर लेते हैं. अभी क्या प्राइस चल रही है इसकी? 870. और अभी उसकी प्राइस है 22,040. 22,040 माइनस 21,870, या 170 का फर्क. ये बार 170, 25 पॉइंट इधर का फर्क है. तो 6106 प्लस 25 सर 32 वाला. 32 से यहाँ 32, क्योंकि 29 वो रहे, क्योंकि मैं 7 का फर्क रखता हूँ ना. आई नो अंदर वो 5 रखते हैं, मैं जरा थोड़ा सा बफर ज्यादा दे देता हूँ. पिवट. तो मुझे जो नंबर निकला ना वो मेरे लिए निकला है 32, क्योंकि मैंने किया 170 पॉइंट का फर्क है नैस्डैक का. अगर नैस्डैक R2 में जाती है, इसको डिवाइड करूंगा 7 पे, वो बन रही है 24 पॉइंट का फर्क. आप नहीं 24 पॉइंट का यहाँ से फर्क है. अगर 6107 प्लस 24 बने 31 बन रहा है. 29, 30, 31 कहीं, लेकिन पर अगेन हमारी किस्मत कई दफा होती है उन्हें 28-75 से मुड़ जाएगी. तो 3-4 दफा इस वीक में हुआ. एनीवे इट्स ओके, वी गो विद द फ्लो, राइट. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. थैंक यू, गुड लक. बट फ्राइडे 11 के बाद नहीं प्लीज, 11 के बाद नहीं. तो चांसेस आर के मार्केट एनी द टाइम गिर सकती है, इतनी हाई गिर सकती है. अभी नहीं. ये देखें, अगर आप ये मेरा देखें ना, प्रेशर पता कब से डाउन शुरू हो गया है? ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से प्रेशर डाउन है और मार्केट को वो चढ़ाई जा रही है. तो इट्स सो ये नहीं, ये तो सिर्फ होता है एक जनरल रूल कि हमें हाई टू गो लो रहना है, क्योंकि एकदम वो क्रैश किया तो हम लॉन्ग में ना फंसे. प्रेशर डाउन एक एक्स्ट्रा कहता भाई सेल में रहो, बेटर है. अगर लो जाना है तो एक्सपेक्टेड लो S2 भी ठीक है, लेकिन नहीं बेस हाई तो फौरन खत्म हो जाएगा 930 पे. बेस हाई का कोई ताल्लुक नहीं. यस, but the pressure is downward, but they're still pushing the market up. किसी भी टाइम पे नीचे गिर सकती है, so you buy from high and going down. अच्छा, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ. ये आपके लिए नहीं है, ये एरियाज वालों के लिए है कि वो कहाँ. आपको अब मिड बैंड है ना, आप ग्रीन टू बाय रेड टू सेल रहे हैं,
क्योंकि वो फिर अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेस प्रेशर प्रेशर डिफरेंट ट्रेड वाला होता है, बेस का 930 पे देखेगा वो और बटन दबा देंगे कि अगर हाँ वो आपके लिए नहीं है, आपने सिर्फ मिड बैंड्स वाला ट्रेड देखे और अपना वो। लेकिन अगर एरिया आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि R2 आ रहा है, वहां से सेल कर। ओके ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैं अभी बता नहीं मैं अभी कंफ्यूज कर देता हूँ। होता ही है कि हमने कैलकुलेट ईएस की मूव करनी होती है। ईएस जो है वो नैस्डैक का पीछे है ना। नैस्डैक में पहले देखें ईएस और नैस्डैक चलती कैसे। 500 कंपनियां ईएस में, 100 कंपनियां नैस्डैक में, ठीक है। इसके अंदर 75 कंपनीज टुगेदर है। वो एप्पल इधर भी है, इधर भी है, माइक्रोसॉफ्ट इधर भी है, इधर है, अमेजॉन इधर भी। तो जब नैस्डैक 100 कंपनियां मूव होती है ना, तो हमें उसकी कैलकुलेशन मूव 5 से 7 पॉइंट का फर्क होता है। तो जब मैंने उनके साथ ये कैलकुलेट किया कि अगर नैस्डैक R2 में आ गई तो यहां से R2 का कितना फर्क है, 170 पॉइंट का, ठीक है। ये इस वक्त एवरीडे लाइव है डिफरेंट। जब भी कैलकुलेट तो मैंने 170 को लिया, डिवाइड कर दिया 7 पे, ठीक है, एक नंबर आया 24। अब मैंने फिर ईएस में 6107 में 24 ऐड कर दिया कि अगर नैस्डैक 100 पॉइंट गई और तो 24 पॉइंट इसको भी जाना चाहिए, एटलीस्ट 20 पॉइंट तो जाएगी। तो मुझे ये पता क्या है, दोनों सिंक हैं, एक ही जगह से मुड़ेंगे। तो अगर नैस्डैक R2 से मिल गई तो ईएस भी, तो हम वो सिर्फ फिगर कर रहे थे कि नीचे वाला नंबर लें या ऊपर वाला, क्योंकि नंबर उन्होंने दिया हुआ है ईएस का 32, 33, 34 सॉरी 29, 30, 31, 4 नंबर है ना। कौन से नंबर पे आपको ज्यादा फायदा होगा? कंप्यूटर ने असेस किया कि 29 से भी मुड़ सकती है, 30 से भी, 31 से 32 भी। हमारा मैथ ये कह रहा है कि 31 या 32 जो है ना, अब वो यही बात कर रहे थे कि 2875 से आ जाए, वी डोंट नो, राइट। सो फिर उसको ये जो 7 पॉइंट का रूल है ना, 5 to 7, ये एक मैथ है कि जब 100 पॉइंट वो मूव होगी, 25, 24, 20 पॉइंट ये भी मूव हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट जी, 5 एक्सपेक्टेड लो से थोड़ा 5 पॉइंट बहुत होते हैं एरिया में। ऑलराइट, सो लेट्स लॉग इनटू आवर charts. Let me open up WhatsApp so I can start answering any questions. अब ये देखें, ये मिड बैंड आपका चल गया बिल्कुल 100%। इस मिड बैंड ने आपको $100 दे भी दिए। और कल तो इतना बुरा हाल था उसके अंदर। नहीं पास हो गया। नहीं वो तो न्यूज वाला है। नहीं देखें, आप देख अभी जो 903 पे आया है, हाँ 846 पे इतनी हैवी वॉलेटिलिटी न्यूज चल रही थी, क्योंकि 838 वाला चला ना, तो वो ओवरबॉट हो गई थी 846 पे सवियरली। लेकिन वो एरिया से आ गया था, R1 से, वो एरिया से आ रहा था। तो एनीवे इट्स ओके, विल सी हाउ इट गोस। सो लेट्स टेक अ लुक। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है जी? है नहीं सर, नाइट तो लो है ना, वो देखो 84। नहीं किधर, ये तो 30 मिनट्स जाके चेक करो। नहीं ऐसी मैं 6 बजे तो ला रहे हैं, वो 12 बजे तो ला रहे हैं, वो फर्क हो गया। तो मैं तरफ 10 पॉइंट एडिशनल पा रहे हैं। हाँ नहीं डिफरेंट। S1 से R1 पहले R1 गई, फिर S1 और फिर R1 की जगह आई। तो वही करीब नहीं क्या करें, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर क्या रेड, नीचे क्या रेड क्या रिप्रेजेंट करता है, सेलर रिप्रेजेंट करता है। बहुत बड़ी स्पाइक आई थी 21,930।
वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ या ना? हेलो, एनीवेयर सर, एनीवेयर, जिधर पूरा आज ऑफिस फ्राइडे को तो इतना रश नहीं होता। R1 S1 डन, स्पाइक में हो गए थे। सेकंड अटेम्प्ट रिस्की हो जाएगी ना वो, अगर स्टॉक अच्छा हुआ। पहले तो देखे ना न्यूज आई कैसी है, नॉन फार्म की न्यूज आई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया है। अच्छा, आपको लोगों ने जॉबें ली हैं, और नॉन फार्म बहुत 143 है। चेंज कम हुआ है ना, देखें कितना, 1,70,000 कह रहे थे, राइट? सो माइक्रोस में होगी, माइक फ्यूचर्स में नहीं होता, माइक्रो में होगी। All right, let's take a look at this. Let me just check it. Course training and Excel sheet to look at trading the news. हाँ जी, हैं? हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, मैंने any desk देना बस। It's green to go up, red to go down. Non-farm. लेकिन एक न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट वाली ठीक थी। Margins are restored. $30.20 is about to create a divergence. $30.20, because price is going up, strength is not yet. First, it has to get to 12. अच्छा, तो चार्ट्स मैं तुसी पूरा रीइंस्टॉल किया निंजा कॉपी करना। अच्छा, लेकिन चलो मैंने एनी डेस्क दे 538 हाँ जी, एक्सेप्ट करो, फुल एक्सेस देना। All right, so I'm going to make these green. Now slow down another 15 minutes. When the stock market opens, we'll take a look at what's going on.
So ਤੁਹਾਡੀ वन ड्राइव ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ वन ड्राइव एक दफा वो लॉग इन करना Next. जैसे कापियर कल बाय किया ये दो ठीक है नो क्योंकि उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट कापियर दी भेजी नहीं मैं वही देख ली नहीं मेरी तो क्लास अपडेट से 28 सर फोन नंबर पढ़ना थे नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ एक सेकंड नहीं वो तीनों का बच्चा ये रहा ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕੋਈ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ हो गया जी हूं ट्राई करो area second time got tested and coming from the area. I did not take that trade. Let's see what Nasdaq does. Nasdaq is inside the area as well. I would prefer R2 for Nasdaq. ਹੁਣ ਸਰ ਕਾਪੀਅਰ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਨਿਊ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਫਲੋਬਟ ਕਾਪੀਅਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ MNQ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਫੜ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਏਪੈਕਸ, ਬੁਲਨੌਕਸ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਏ ਸਿਮ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ SIM2, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ SIM3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਿਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ SIM1 ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ, SIM2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ SIM1, ਹਾਂ ਆਪੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਪੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸਡੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ SIM1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਲ ਪਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਧਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹ ਕਾਪੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਚੱਕਿਆ 880.70 ਤੇ, ਦੂਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਰਡਰ ਨੈਸਡੈਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਿਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਲੋਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। डन हो गया, मैं एग्जिट हो गया। All right, let's see which way it goes. नहीं वो तो आप ये तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सही नहीं चल रहा, ये चीज सही नहीं है। अच्छा ये वाली ले लें आप लोग सीखते हैं ये जो है ये आगे की हाइट जो है ना अच्छा है ना, ये लो है वो हाई है, ये लो है वो हाई है। हाँ हो जाएगा, डाइवर्जन नहीं है, डाइवर्जन ब्लैक कैंडल के बाद आती है, ब्लैक कैंडल से पहले कोई इंडिकेशन देता है।
कल विस्मा जी की कॉल आई थी सर। हाँ जी, हाँ जी। Expected to go to Pro rather than Pro Plus. What's the problem with Pro Plus? They hold back bank. Sorry? They hold back bank. It's okay. I think it's your money, 4 months, they'll give it to you. Midterm पे order बताया मैंने। हाँ जी 6107.5 मार्केट अभी शुरू होने वाली है। All right. All right, 2 more minutes and let's see the market news. It is as per our new trading sheet, it's red to go down. So let me log into the trading the news. Sir, trader weight दो मसला आ रहा है hotspot. सिर्फ hotspot कर लो क्योंकि I know trading view is okay because trading view is external. In trader weight you're doing from this IP. Trading view you're not. That's the only thing. Because when you have 50 people doing, if we look at trading the news and search for non-farm, it says green to go up, red to go down. 8:30 a.m. So anyway, we go with the trend. Okay, another mid-band work. That was a gap trade. अगर आपने mid-band पे लिया तो हाँ ठीक है ये आप लेकिन बाकी चीजें हायर हाई से था सब कुछ था डाइवर्जन 30-20 पे थी हाँ all right let's see
If Amazon earnings versus non-farm versus unemployment rate, so three things are happening and market is officially open. Let's see which way it goes. You should be trailing, right? Yeah. You should be trailing your profits. ये फिक्स हो गया, ये प्रॉफिट फिक्स हो गया। अब ये मार्केट जब नीचे गिरेगी तो आपका प्रॉफिट नहीं तो 2 mid bands back to back worked. That was a gap trade. Price shot up to very close to R2, guys. Be ready. R2 is coming for Nasdaq. नहीं R1 हो चुकी है sir. R1 is done. R2 we are waiting for Nasdaq and yes. Mid band, and we missed 2 buses early. So wait. So if you computer is saying if you were to buy 6110, वहाँ पर limit order. Yeah. सर हॉटस्पॉट से किसी ट्रेडोवेट से लॉगिन मसला है, निंजा बंद करें, हॉटस्पॉट ऑन करें. Nasdaq inside R2 very close, guys. Computer is saying 960 to 940, 22,000. 1 second. I am messed up. Sorry, guys. I'm looking at old charts. It's inside R1. Come on, man. I didn't even refresh. Sorry. It's not. It's in R1 Nasdaq, not R2. My bad. It's doing the upper range, of R1. That's what happens when you don't refresh. I didn't say. Candle still has, the 1 hour candle still has 26 minutes. So you have to make sure it can break your R1. R1 is officially done. So now the high is 21,952. And I am back on Nasdaq for one reason. Amazon earning non-farm. So Amazon earnings came last night. So it's तो आपके 125 पीछे जा रहे हैं. जो करंट प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, that's not the true realized profit. That's called an unrealized profit. Realize it whatever you're locking. It should be okay above the area. Let's see. Now it's going to create some liquidity. R2 upper range is done too. That midband is still has not failed yet, up to 8.75 or 9. Because 30-20 midband. नहीं R2 हम लेंगे ना. ना अभी तो नहीं. मैं कह रहा हूँ R1 upper range got done, and that midband passed 100%. Congratulations. Trail again, guys.
or make it at break even. ले लिया sir? ठीक है, कोई बात नहीं. Congratulations. That peer नहीं है. It's okay, don't worry. 50 is okay. Look, if you got out early, somebody's trailing. They make 250, 200. It's two types of traders, 50 in and out. Why I like to trail? I'll tell you this. You take 50, 50, 50, 50 4 times. One bad trade, 250, everything is gone. Why not maximize your one trade? Previous two mid-bands went up, like she locked 250 out of $300. Let's say I got actually 325. 320, but and you saw 400. So that one trade is done for the day, right? So 930 started, 936, 350. So rather than you only took 50, you're like, man, at least 50 don't go away from me, right? But this trade from 611 to 613 is already, so learn to trade. In life, you will get much farther rather than scalp. Yeah, it's okay because one good trade will take you. This is third mid band, by the way. Nasdaq has gone above the R1. ES is above the R1. So R2 guys, R2 guys. So let's see. Why my charts for ES? No, right. It's touching the area the third time. Okay, देख लेता हूँ. अब hotspot पे आ गए? Okay. Remember, price is coming from lower high, just so in this candle. That's the only thing wrong I see. So two conditions. So it's not coming from a higher high. Yes. Still is struggling in that area. Nasdaq is trying to push up. That mid-band passed again. Didn't make the 4 candle yet. Amazon wants to take up, but not everything else. Hello, Ji.
Struggling at R1. All right, Nasdaq both have crossed R1. Let's see. So it's almost 70. Here we go. 970. Yeah, there's a chair up there. Let's see when the reversal comes. What is taking it up? Market. Amazon is down 2%, but everything else is up. Tesla is up. Microsoft is up. Meta is up. Apple is up. And Nvidia is up to 130. Google is pushing it down. Only Google and Amazon.
R1 seems to be very strong resistance for Nasdaq because it's a 60-minute upper band. It is your week high. So right now it's previous week high 970. Nope, Nasdaq doesn't want to climb yet. ES is still climbing. ES is heading towards R2, but Nasdaq is stuck at R1. ये R2 का सेलिंग पॉइंट क्या है? 29 से 32, तो इसके दौरान रिस्क शुरू हो जाएगा। 29 ले लें, 30 ले लें, हैं? सेल 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 सेल। I know, kind of gets quiet because market is stalled. That anybody took ES midband, third midband works, no problem. Sir, yeah, wait, good. नहीं जी, Nasdaq के पास अभी जान नहीं है।
कौन सा वो स्टार्ट करेगा अच्छा स्टार कोई डिले करा था तो ऐसा करेगा अपने अकाउंट से बनाया तो उसके बाद आप बंद करवा था Let's see. What's Nasdaq? 6 minutes to go for this 1 hour candle, 15-minute candle, and 30-minute candle. R2 is coming, guys. Be ready for ESR2. Nasdaq, no chance yet. 29 से 32 के दरमियान है. 29 to so mid band is coming at 6116 for green. For those that are looking for green mid band. Another bottom of the bar. Let's see. What type of news on 10 o'clock? We have, 4 minutes to go for a medium impact. University of Michigan consumer sentiment and inflation expectation. So 10 o'clock, guys, just this bottom of the bar worked as well. Gave you a point.
2 minutes news, 2 minutes candle closing, 2 minutes everything. It's coming down fast. Mid band, let's see. It gave you so far 37.50, $50. There you go, one mid band. $50 I see. 62.50, 75. I 100. Mil gaya ji. Everybody should have traded that. That's it. There is no magic to it. You can't, is you sat in mid band, you took your trade, you took your 200, 150, whatever, or trail. Though those who will be trailing would be break even. So they saw maybe 100 and they moved their stop loss to 0. So because if from here it goes up, they'll be trailing. So this trade is done. I don't see anything wrong. Large triggers are open. Price coming from higher high. It's above the area. Used it as a support and give you 2 points. There you go. But don't enter that mid band again, please. If you're taking your profit, you're done. 2 minutes news, medium impact. It could go either direction quickly. Could go up to R2 or could go below R1. So let's see. 3020 needs a bit of a release. It's overbought quite a bit. Maybe at R2 it would get over, release some pressure. But high to go low is our plan. So R2, Nas. My bullocks is done, but I haven't had a chance with other trades yet. One minute to go news, 16 seconds to be exact. So it's a medium impact, but PA you can trade if you're trading PA. This is not a crazy news. There you go. Enjoy. Happy? Happy? Good. So we have to warn you. This is going to kill you if you're not in the right trade. You're thinking buy and then they came and killed you. Luckily, I was in short on 1 micro. I was in one short and he gave me, no, what's that? $170. That's 2 micro, sorry, 2 micro. See, happy? This is called news trading. Consumer sentiment may be up, maybe down, but they ripped everybody apart. People were thinking red, it went green. People were thinking green, so news impact, stay away from the market as far away as possible because sab cheezein theek ho rahi hai, bar tufan aa gaya, right? So congratulations. But that's why we say always put a stop loss. I'm in a trade, I know when to exit, when to profit, but now we have a bit of a Mental stop loss. oh, no mental stop loss, never. It was it will mental stop loss. Either we'll be laughing or crying, and sometimes laughing and crying same time, right? So it's a problem, right? So that's why I'm sitting. You guys are rowing. I'm the guy sitting. वो जो होता है ना कश्ती के आगे उसको, there's a word for it. So I'm the guy just telling you what's coming ahead. You're still taking a trade. So when I say 16 seconds, look, medium impact moved that much, all the way from above R1 to below R1. So that's what I said. Whether it will go to R2, I don't know. Whether it will go below R1, that's the other way. So that's called a gambling trade, where you had no idea what would happen.
जी आप अजहर भाई के फ्रेंड हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें तो हम आपको टेक केयर कर लेंगे. All right, anybody who's short is making a killing. So the price, by the way, went to S1 for Nasdaq almost. सर कहाँ से वापस आ गई है? 767. Very close to night session low. Very close. The high to go. This is what I meant by pressure. If any bad news, market will just kind of collapse. Because this is too high. 22,000 is too high of a number. 647-228-0694. That's expected low. When the pressure is down, go as low as possible to pick. Because market with Mr. Trump is too volatile. So the numbers of University of Michigan came, and let me refresh. And they came low. So here's the how to translate the news. So they were expecting that previous was 71.1. They were saying 7.9. But look, everybody in America, University of Michigan called. They have 300 million people. They do a survey. All right, they will call you, Mr. Rizwan, Mr. Vikram, Mr. Rafe, so and so. How do you feel? So they take that survey and they do a consensus and they say, so University of Michigan says, no, customers are not happy in US for this quarter. So, and the market just sharply went down because, and then you already had non-farm pressure building up. So there you go. Most people are done, I know. If you're trading after your target, you're over trading. But if you're on sim, keep trading 23 hours, please. The better you can ride, the better it is. Take every mid-band. Green to buy, red to sell. तो अब आप sell करते 6096. देखें कितनी तेजी से mid-band pick हुआ. And you're done. That was a gap trade. And it's falling like आने दीजिए आने दें आज. वो देखें Nasdaq कहाँ से कहाँ चलेगी. इस तरह उस ट्रेड को खुला छोड़ा होता तो नाइट सेशन सारा कुछ तबाह कर दिया. But S1 it worked. S1 worked 100%. The computer predicted it will go down from S1 and it worked. What a beautiful drop. See, that's why we love shorting. It can happen 5 times faster, 7 times faster. I'm not in any trade, by the way. I'm done. Just did bull knocks and legends. So because I was waiting for R2, never got there. I had my order set at 31, but didn't go there. It's okay. I didn't want to take S1, so I did not take S1. Done, ji, Vikram. Done, okay. That's good. The market can change so fast, and that's why the news will overwrite everything, guys. Wide. There you go. Touch the S1, give us a few points. I'm not an S1 type of guy anyway these days. In Nasdaq especially. Maybe S2, maybe. Because that's S2 is a week's midpoint. Sorry, night low. Night low is either Nasdaq mein 732 night low for S2 is, and S2 is very close to the 60-minute divergence. So anyway, I'm not the captain, guys. There's a word for it. Sorry, the person that chants. Yes. Yeah, it's called Coxswain. 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 I'm just analyzing it. That's it. Yeah. Sure. So again, R2 is valid, guys. Just remember. Nasdaq touched us. हाँ दोनों साइड पे चले. मुझे S1 से डर था, मैंने लिया ही नहीं क्योंकि S1 ना मॉर्निंग में डन हो गई थी.
because it would be changing way too fast. So I'm not taking S1. There you go. Congratulations. You made 270 in short. Congratulations. Row. And that mid-band worked, by the way. 100%. Price was coming from higher high, did not touch thing. And now it's coming from lower high, guys. So be careful. No. So if made a double top, all right, things are too crazy right now. No, not. So I know some people are waiting. I'll tell you a trade which has. So look at 3020. What's the number? 609875, right? So what they will do is, give me a second. Exactly. That's where the sell will happen, right? So in future, 6099 minus, I generally for 3020, I add 2 more, 9. Because I want to make sure that it does go through it, right? So 6099 minus 9. So 6090 would be my entry. Okay, that's called the black candle trade. That has nothing to do with trend, the triggers, areas, nothing. And every black candle just price changes direction, up or down, right? If you take any number in 1510 minus 5 or plus 5, you will have black candle formation. So that's where some users to black candle trade. It's good in 3020. It's not really good in 1510 because it's too narrow. But 30, so what is the 3020 number? 6099. You will reduce 9 from it, and you want to sell a sell stop order. So what I'm trying to say is when the price comes from 6099 to 6090, that's where I will sell. अगर आप light बंद करें मैं इधर इससे okay. All right, so look at this number. Am I in Nasdaq? Oh, I can't even blink with the. All right. So 6099 is 6090. नहीं सर लेकिन 6090 से बाय हुआ, 60 वहां से सेल आपका सेल हुआ और एग्जिट हो गया 89 पे, 1 पॉइंट लिया, 4 टिक्स लिए, बाय हो गया, एग्जिट हो गया. So for 4 ticks is really good. But the ideal would be trend change, sell top of the bar, 30-20, give you beautiful points.
S1, let's see if it breaks S1. So what I was saying is, look at the number 6099. You would sell from 6090 and then take your profits coming down. Look how beautiful that trade went. 30-20 में ये उसका 30-20 का. Nasdaq is heading to S2, guys. Be careful. S2 Nasdaq. सर आ गया जी, आ गया 6, सर आ गया जी 600, बड़ी स्पीड से आ गया Nasdaq में. And ES is still a little bit far. So we have 700. The problem is it's not enough gap. So ES still has 10 points gap, but Nasdaq is dropping 705 to 670. 30 divided by 5, not enough gap. So it may go below S2. Let's see. So stay in short. That was the plan. High to go low. S1 third time it tested it and it broke. So don't buy at S1 anyway. Nasdaq is inside. You're very close to S2, guys. And pressure non-farm is bad, so 685. 685. Yep. 20,685. 285. जी सर मुझे बता दें, मेरे लिए ज्यादा आसान है. हाँ जी, है नहीं स्टक तो हो गया, लेकिन आपको ट्रेडोवेट में जाना है ना. कौन से अकाउंट का ट्रेड है? सर एक सेकंड. स्टॉक इतनी स्पीड में आपका पूरा निंजा ही स्टक हो चुका है, तो इसको बंद करें ना. ट्रेडोवेट खोला हुआ है? नहीं सर, अब जो भी होगा अब देखा जाएगा. अब मैं ट्रेडोवेट नहीं खुला हुआ, तो अब इसमें भी अब देखें क्या. अच्छा एक सेकंड जी, देखते हैं अभी क्या आता है. ये तो $115 बने हुए हैं. इसको एग्जिट पोजीशंस अभी कुछ नहीं खुला यहाँ पर, उसने लगा ही नहीं था. हाँ लेकिन उधर यहाँ हाँ पोजीशन में जाएं, पोजीशन विंडो तो, और इसको अब निंजा को ट्रेडोवेट खोल के रखें. हाँ ठीक है. अब मैं नहीं क्योंकि आपका ट्रेडोवेट का ही है, दोनों ही. हाँ बस वो बंद हो चुके हैं, तो इसलिए ट्रेड हो गया. दोनों खोल के रखने, फिर एक इसमें टिक ट्रेडर और टेक प्रॉफिट. नहीं फिर उसमें करेंगे ना एक. हाँ दोनों एक डिफरेंट ब्राउजर में खोल के रखें. ठीक. ये कौन सा था? ये वाला देखते हैं. अब ये तो वो लेजेंड वाला तो हमने ट्रेडोवेट से किल कर दिया, इसीलिए हॉटस्पॉट देखते हैं. होपफुली कनेक्ट क्विकली हो जाए, इसमें कोई ट्रेड ना लगाओ. टेक प्रॉफिट. इसमें भी खो चुका है बाकी. सर इमरजेंसी एग्जिट साथ रखा करें, निंजा जिस स्पीड से आता है ना. सो देयर यू गो गाइस, यू टुक अनदर मिड बैन इफ यू टुक इट. Completely up to you. I took a mid-ban. I took 2 points from that mid-ban. Oh, sorry. Yeah. मेरा यही वाला है. हाँ तो दो चीजें आपके, क्योंकि एक टेक प्रॉफिट चल रहा है, कॉपियर चल रहा है. एक ब्राउजर में खोल लें, एक ट्रेडोवेट दूसरे में, और हॉटस्पॉट से, क्योंकि ये इमरजेंसी में आपने वो प्लेन क्रैश होता है तो इन्फ्लेट करनी है जैकेट पर. सो
That's why we give you all these tools to get out of a difficult situation. Keep a habit. You don't open Ninja without trade of it, because there will be chances like he made it in profit. It's $70 micros, but this could got like, you know, by the time you sorry. Yeah, साथ browser पे खुला हो per dia, especially when you are, because the moment if Ninja crashes or anything happens, your computer has a internet issue. So trade of it on the phone, trade of it on your browser. So that's your escape of flatten your positions. Generally, this doesn't happen with when you're using your own money. And if you are using your own money, you call GFF right away. You call AMP. They have an order desk. Please cancel my order. You know, so that's why we say every time you should put a stop loss, because any time could happen, and then you're. Stop loss is there, then we take it. So look at the black candle 6084. Let's see, it's touching a mid band. ये नंबर ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे कैसे है? यहाँ पे रेशो की जरूरत है, ग्रीन आ गया ना, ये लास्ट फिगर पहले बता रहे हैं आपको कि ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये डबल टॉप हो गया लेकिन ग्रीन है, अब ये बुलिश है वो बेयर है, चाहे आपको पॉजिटिव ट्रेड हो वो भी रुक जाओ रिस्की. So day number 2 is done for legends, and I made how much? 190. Good. Got a beautiful trade from a black candle. So I took 6079.50, added 4.75, and then I took that trade. So that's called the. नहीं 7950 plus 5. That's where I bought it in future when the price wasn't there yet, because it was coming from a higher low. So that's a good strategy as well. Today market is actually moving. That's the good news. Remember, now it's below S1. Next candle is gonna do at 40 minutes. So for 1 hour, let's see if it reverses right here. So 60-minute mid-band. Didn't. So our number was 670. It bounced from 685 for Nasdaq.
Divergence on 30-20. Mid-band worked great. That's a gap trade. And yes. ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਬਾਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ number of ask and bid. How many people are sitting on this price asking and bidding? ਜਿਹਦੇ ਸੇਲਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਇਆ Yeah. Somebody's saying I'm bidding this much, somebody's saying I'm asking this much, right? So it's on ninja trader. only on Ninja, yes. All right, kind of slowed down a little. Another mid-band worked even after the divergence. So price went to mid-band. So just stick to the same rules. Green to buy, red to sell. Tells you a price. और कुछ नहीं है. 18 साल से यही कह रहे हैं वो. Green to buy, red to sell. Rest is joke. And now if you know the habit of trailing, you trail. So beautiful trailing.
What is my Bullnox threshold? I need to have 50,565 minus. Sir, Bullnox ले आज ट्रेड लाए कितने थे? मैं 170 थे नहीं ठीक है निकल गया ना देखो देखो मैं सिर्फ तो रिमाइंड ਅਸੀਂ दोनों इकट्ठे चल रहे हैं ना Bullnox so my net is 160 through micros so आपने बाय लिया S1 okay very good minus 48,066 so yeah 24.99 full threshold not bad area ज्यादा और 30-20 वाले जो अंदर बताया and when so that's the trade that's the true trade inflation expectations went up. So these were the two things that kind of news, University of Michigan expectation, and inflation will go up in US. Now it's hovering between S1 over and over and over, right? So back to bounce from ES S1 again. Let's see. Mid-band. Done, sir. Very good. Very good. Another mid-band worked. आसान है ना जी आप अपने सेल पे रेड टू सेल ग्रीन टू बाय राइट Okay, see you. Have a good weekend.
S1 बड़ी strong support बन गई जी 4-5-6 दफा S1 is giving hard time to go down for ES. Yes is again bouncing up and now trying to break that. Like this is fourth attempt. 1, 2, 3, 4. Yeah, fourth attempt. Divergence. 362. Even after divergence, that mid-band passed. All right, trade of it. Let's log into Legends. So Legends payout number 2, after my payout number 1, I did trade 3 days. Day number 1, I think 170. Day 2, minus 30, because yesterday was just minus 30. And day 3 today, 190. मैं फुल कर रहा हूँ ना, क्योंकि पैसे भी निकल चुके हैं और ठीक है ठीक है ठीक है एरिया या R2 या एक्सपेक्टेड हो okay yeah no but 24 hours the team is okay no problem because remember rhythmic एक login allow है या rhythmic login okay Sir, मैं पता की कीता है हुन देखो मेरे को so the question is why did I buy second login for a month 1 month $35 why because then I can open our trader on my phone and on my these are PAs right I don't want to risk it because TradeAway allows you multi logins Rhythmic doesn't so Rhythmic I bought 35 for each month second login so I can keep my R trader open in case Ninja crashes. I have an emergency plan. So when you are paying, you're risking 3 PAs, the second login is not a big deal. So day number 1 was, so today is day number 3 out of 10. So today is 190. Yesterday is minus 30. Wednesday is 181. So good. So I have to trade 7 more days to get my second payout from Legends on the same account. So 150 times 10, 1500. I got 181 plus 1, what is today? 190 minus 30, 341. Okay. Yeah. सर आपका लॉन्ग दे रहा होगा प्रॉफिट कंग्रेचुलेशन आपने उसके एरिया के टॉप से लिया था ना जैसे निकल गया था दैट्स गुड ठीक
लेकिन पिवट पॉइंट से निकल जाना अगर उत्थे तक 820 तक 820 unless you want to trail. So today is my take profit 5 pro accounts day number 1. So I will upload a video that I did my EAs in 14 days, 5 of them with a copier. And then yesterday I paid for my PAs, which they call it pro. And the cost is $130. So $130 plus $75, that's $205 per account. So take profit, my day number 1 is done. And there's no limit. You can make as much in the pro account the first time. So sometime I would risk maybe a full account out of 5. Because the moment I get to 50, my goal is to retrieve $1,000. That's my total investment so far. क्या जी? मैं अभी देख लेता हूँ सर. Touch the mid band. Beautiful trade from mid band. So the way I'm doing my take profit with the copier, one account is doing micros, and then the other account I've switched the ratio to 5 micros. So I'm doing 4 accounts with one specific rule and 1 account with 5 micros. So within a copier, you can set up your ratio. No, sir. No, it's a hedging. So every company, Murtaz, tick trader, he was short on ES, he was long on, they denied his payout. So you cannot, because that's called hedging. So if you can go in a different market, similar, I know, especially ES and Nasdaq, you can, because they work opposite, right? I mean, they work together. So yeah, maybe if you're gold long, this is okay, but they call it hedging, and they are not allowed on any platform. So inside your pro account, P account, master account, no company will allow you to hedge against each other. Sir, ਤੁਹਾਡਾ take profit है या legends है? वो ट्रेडोविट्स लॉगिन करो, वो जो है, हाँ जी सर, वो पहले इमरजेंसी है, मैं एवरी डे पूछा करना सारे ट्रेडोवेट दी विंडो नाल खुली है जी, क्योंकि सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ. ਨਹੀਂ ट्रेडोवेट ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਨੀਡੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ट्रेडोवेट ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. Sorry, I gotta repeat that in English. Always keep your TradeOweight open. 30-20 mid-band work, guys. Feel like I've been coming here non-stop, man. It's Saturday, Sunday. Hindi se shuru hai. Hindi. No, I think more. This would be my 4th. Yeah, this will be the 4th. Because the 4 sessions of Hindi, that's 4 weekends. 2 sessions of English, that's 3 weekends. Okay, sir, no problem. Website super areas te jao. ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ TradeOweight ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਡਬਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, because all I care about the एक 1500 निकल गया ना टेक प्रॉफिट वाला, तो वो राहत भाई ने तो मिल के दोनों ने 10,000 ले लिया. That's incredible. आपकी टेक्निक्स, that's good.
नहीं वो Nasdaq है, वो Nasdaq. उसका क्या जो है ना, it's more of her mind, it's not much of a trading. Discipline. हाँ. X in Let's check out the areas. How did we do yesterday? Remember we made for everything in area trade. All right, let's where is everything else? There you go. Let's see. Let me refresh. Today is so ES areas, Nasdaq areas. Gold is getting to expected high soon. So 29.17 you will sell from. Crude oil, not in anywhere. Dow, not anywhere. Russell actually worked R1 beautiful, and S2. So anybody who took Russell, they are done. RTY. And उसके बाद कौन सी मार्केट? Sorry? सर R1 नहीं होता. गोल्ड में सिर्फ दो ही एरिया होते हैं. और लो उस गोल्ड में क्योंकि इंट्राडे हम करते ही नहीं है. Let's look at RTY. What was the next is natural gas. Natural gas is nowhere to be found. Let me duplicate in the new window, and let's do them all because that way futures, silver, 6C, Canadian dollars with USD. Oh, we made some money somewhere. हाँ देखें कितने बने हुए हैं जी? $480 बन गए तो one. Oh, he doesn't do forex on Fridays. All right. 6 duplicate 6E for futures 6E, which he doesn't do anyway. But and the next computer, I'll go. Let's look at. Let me do the YM. Okay, let me add some instruments. Instruments list, futures. Let's add 6B. I didn't do 6B yet. Okay, 6B and 6E. A euro. Euro is good. Next, let's write futures and silver. Silver stands for SI. Let's add HG for copper. All right, let's add BTC, future. Good. Let's add ETH for Ethereum. वो area में नहीं आएंगे. So let's look at change this to futures and silver. 6B is done. Let's do 6B first. So next day, every area is there. Duplicate in the new tab. Futures, HG for copper. Duplicate in the new window. Futures, next one is silver. And 2 more to go. So all 15 markets, Monday to Thursday. Futures, BTC. BTC volume. Let me double check to make sure BTC is still February. And last one is Ethereum. Futures, Ethereum. All right, let's save this. So next time, save workspaces. Good. So ES, Nasdaq is good. GC, let's do YM is good. Russell is good. Gold is good. Gold is heading to 17 to 22 is our area, guys. 20, almost 3,000 पे gold ले गए यार. Crude oil. 5,000 सर. नहीं 5 साल. सिर्फ 5,000 हो जाएगा.
तीन NG, लेकिन अभी के लिए नहीं, 5 साल दें। क्रूड ऑयल अभी कल की बात लगती है 1400 पे गोल्ड फिर रहा था। I have a relative and he has a feeling every time he buys gold, gold goes down. So, yeah. So, I'm like, no, man. It's like a guy waiting for real estate value to go. Remember, Daniel used to tell us a story. There was a guy and he had a superstition that if I meet this person today, my market will not be good. Like, so he used to avoid him deliberately. So, where is everything else? It has one very strong support so far. Your cluster, eh? नहीं सर, इधरों देखो I will put in this type of chart. Let's do this slightly one more. Oh. कौन सी चीज? Oh yes, yes. So it means that reversal is due. Now the market is in consolidation. Don't take mid-band trades, please. Okay. कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ because my trading is done, so I can explain how I did. Okay. एक तो चल रहा है ना आपका, नीचे एक चल रहा है, आप उस पर राइट क्लिक करें. So the question is, how do I have so many instruments open with my areas? Because we give you guys 15 markets. All right. So when you go open up the full chart of ES, okay, right click, go to indicators. ये देखिए. नहीं 30 मिनट का, 60 मिनट का कोई भी चार्ट खोल लेना तो आपको एरियाज हर मार्केट के पता लग जाएंगे. S2 is valid? Yes, it is valid. Still valid. Didn't touch. हो गया जी आपका indicators. Okay. Click on this indicator and then add to make sure you have at least 3 of these. One is called bar timer, one is called price line, and one is called superareasalgo.com. These 3. Because what does bar timer tell you? How much when the next candle is closing. What does the price line tell you? This yellow line that's moving up and down. नहीं वो तो आपका डला हुआ है, वो ऑलरेडी है, सिर्फ ये 2 और ऐड कर दें, बार टाइमर एंड प्राइस लाइन. Make it 5 so easier to see. There you go. You know what I did? And I gotta do them all, right? I should have done it on the, so last line, you can make it 5. So to see exactly the price line. Then I will do current price. So in one last line. So you can make it. Yeah. So price line. Because the benefit of this is in one glance you can see where the, I'll make it slightly bigger on these. There you go now. Because this price line is this yellow line. You can make it white, you can make it black, but it kind of tells you where is this? Because so it's hard to see a small line visual. Brand new chart color. Price line on crude oil. Because yellow is hard to see. Let me change to price line to 5. Natural gas. Because I know a lot of guys now trading copper and silver along with gold. Because silver and gold are going together, right? Yes. और फिर तीसरी मेटल भी डाल लें.
Copper भी डाल लें. 6C. Oh man, I should have, when I was duplicating, I should have done this one setting. Otherwise, now I have to do them on every, right? So all I'm doing is just double clicking the price line and हो गया जी, add हो गया. Okay. So now this is done. So it, now you see this, right? Right? Okay. आपने price line को double click करके add किया. नीचे जब आप right click करें, indicator. So right click, go to indicators. Make sure the price line is added to your configured. So you have to double click. Oh, what a beautiful S2, guys. S2, it's coming. S2, Nasdaq. Oh, changed fast. Momentum changed fast. It went below S2, so what happened? Oh, super fast. What happened? News or whatever. Must be new. देखते हैं कहाँ. No, it's not. Expected low, guys. S2 is no longer valid. Market is crashing like crazy. नहीं area तो कर लेंगे. Area sir जी, area. Nike is losing. Done. I took S2 and I'm done for net EA. Wow, what an incredible support, guys. Incredible. S2 for my Nasdaq. I am profitable. Yep, S2 is done. Nasdaq. अभी वो भी हो गई, वो भी पूरी हो गई, लेकिन वो बहुत स्पीड से गिरी थी क्योंकि वो ज्यादा आ गई ना. Nasdaq. So Nasdaq S2 is done. 615. So I took it from S2 6. Two micros I took on my PAs, and it went as low as 615. $355 points. Let's see if it goes down and tests his S2 one more time. Oh, they ripped everybody out, right? So now expected low, guys. That's it. और तो भाई फेर दी उन्होंने. रिवर्सल टाइम आ गया 10:45 के बाद फ्राइडे का. नहीं वो सारे if you actually get a chance in life, go to Wall Street in New York. You will see all the people suited, booted. Around this time, they're heading down the elevators, and they will be heading to Las Vegas to do in a real casino. So everybody they've ripped off the Wolf of the Wall Street. It's so much fun to watch. Just go and see. They'll be standing eating hot dogs. We call them in our language monkeys because they're held. They all follow whatever the system is telling without their using their brain. The long story short, it's so much fun to watch them and enjoy. But what they're doing is from this casino, they're going to the real casino. Because, sorry? Yeah, I know, but I don't have no sympathy for them, man, because they collide together and then they kind of rip everybody out. So what we follow them.
whatever they're doing, we are following, because if they're selling, we're selling. If they're buying, we're buying, right? So, and these computer models, mid-band worked one more time from S2. So if you're done your target, please call it a day. Greed is going to come over, and Friday, you don't want to have a bad weekend. Trust me. So if you're done, everything should be green. Here's the funny part for my trades. What's the area? 650, right? At Nasdaq, 650. If anybody's watching the area, 650. What is my ATM? 35 and 15. So it 30 or 15? 35 ka stop loss, hai na? So what's 650 minus 35? 615, right? Look at where the market bounced from in this volatility. 615.50, and then went back up. So it went as low as very close to my stop loss. I just looked at it, that ATM was on or not by 2 ticks. So I gave myself 35 points against it. So I picked 650. So what's the number that it gave me? 650, and then my ATM was at 35 points below, and it came out in profit. That's so. By 2 more ticks, had it gone to 614, my stop loss would have hit, because I can't let it slide to like fully account. So wow, man, that was incredible. And after that, Every day is bad day, good day. To me, these are not. I don't get bothered. But after that, it went to you. My TP. So my TP was 15 points. So it took me out, because 15 times micro, I only care about in my Apex PA, their limit of $50 a day. So अब तो sir volatility तबाही पे आ गई है. So 6, one more time. Let's see if it goes to test S2. Sorry guys, I had to run over there to pick the area. It just came, the spike came out of nowhere while I was looking at it. I'm like, can't miss this opportunity. ये Nasdaq, ये देखें बिल्कुल वही हुआ ना. मैं उस वक्त डबल क्लिक कर रहा था. मैं कहा भाई ये तो S2 पे आ गई है. भागा गया, ऑर्डर लगाया और but had I taken 600, and what was the number? Upper number was 670. Then it would have hit my stop loss. So lucky for me, I entered from 650. So, but you have to always take the stop loss from the upper range or the lower range, because computer predicted that we will. I think our bloodbath has begun for this Friday, first Friday of the month. Looks like it. Yes, another mid-band. ठीक ठीक है. मैं ट्रेडो वेट दे विच शो हो रहे हैं. ओके, मैं हुणी लॉग इन कर लेना. All right, let's go back to. Let's look at next market. आपका आ गया जी ये बार लाइन. अच्छा, मुझे let's repeat it one more time. On that chart, right click. Let's go to indicators. Okay. Do you see these 3? ठीक है ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਰ ਲਓ. ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਦੇਖਣੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. Price is heading towards S2 one more time, guys. So expected low.
Expected low would be our next number, 520. सर पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेक्टेड लो भी थोड़े चल सर एक्सट्रीम लो से 600 पॉइंट जा सकती है, हर चीज देखी हुई है 4 सालों में। एक्सट्रीम लो से भी 600 पॉइंट ऊपर, तो हमने हर एरिया पे अपने रूल सेम रखना है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखना है, क्योंकि अभी ये गिरती और मेरा 615 ठीक है हो गया, एक नहीं हुआ, लेकिन वो अगर 500 पे चली जाए मेरा तो अकाउंट खत्म हो जाएगा ना। तो every trade I have to go in with one particular thing. Hey, I could lose my account unless I put a stop loss. So right now, look, it's testing my 650 again, the S2 right now. Now Nasdaq and ES is kind of out of sync at the moment. So there you go. It's heading, both are heading to expected low now because pressure is down. Triple fourth diversion on 60 minutes. 60 minutes is heavy divergence to the downside. So next candle open at पूरे वीक में जो मार्केट आते हैं वो फ्राइडे को नहीं वो कई दफा 4 फ्राइडे के बाद ही आता है। अच्छा अच्छा हाँ सर गोल्ड द माइक्रो अप्रैल द कॉन्ट्रैक्ट है यस यस इधर जाओ पहले, टूल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, रोल ओवर। कल चार्ट बनाए थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ जी Please 30-20 divergence, yes. Beautiful divergence trade. S2, let's see if S2 becomes a resistance yet. Not yet, not yet.
Strong diversion on the same time. Yes. But maybe S1 may become a bit of a stopper. Let's see. Oh, come on down now. $30.20 is not red yet. Yes, first time. Yes. Expected low now, guys, for those that are doing
areas for both market. S2 is done. No problem. No. All right. What time is it? 11:15. So now we just sit and wait. So it's so much fun to watch the chart itself. Like for me, it's just these boxes. Honestly, if you see my things, for those that are doing area, now I'm waiting for the price to go to expected low. And let's say if I do a chart trader, I have placed an order buy limit. Done. When the price on the upper level. अपर लेवल क्योंकि एक्सपेक्टेड लो है तो अपर ले लें क्योंकि ऊपर जो गेम है 520 से 470 है बहुत बड़ा गैप है तो 523 पे ऑर्डर लगा दिया ऐसे भूल गए आप मीनिंग लगे कब भी आए yesterday we sat here nothing came 3 p.m. got home opened it up boom S1 4 o'clock boom R1 2 trades I didn't take S1 I only took R1 and done. The computer is now saying if you want to sell a buy on area trade, buy at 21,520, 525, that range. Expected low. Today I gotta run slightly. I will be back Monday. I'll be back tomorrow. मुझे और विक्रम भाई जाते ही नहीं है कहीं और माजिद भाई if they build a shower in this thing I will not go I won't go home trust me when I opened my fat sportsplex near York University cost us almost $1 million before COVID I used to sleep there like they had showers they had everything because when you're building something you give your 100% yeah it didn't work out because the third lockdown really killed us. My rent alone was $14,000 per month, dollar per square foot.
And then you got to pay the employees, you got to do this and that. I'm like, nope, not taking that, right? So, but my second business survived, Placius won. So that's an indoor kids. The Sportsplex was just cricket, basketball, cricket and like badminton. So anyway. Oh yes, one quick announcement. Just remember, very soon, all of you may get a pass. It's not a pass, it's a key card for this location. So what is happening is, because of security reason, we have some users who just randomly show up or things like that, because there are two offices here. This is called WLT, Win Lifetime. There's another company, we own it. It's called Limitless Wealth Enterprise. That's a subscription-based model. That's where you pay monthly. Here you have bought the license and you're paid one time. And then you pay for the areas, or that's optional. We don't want those users coming here. You guys can, of course, go there, because it's like a plane is going business class and economy class. It's the same plane, right? It's fine. You paid extra. So this, you guys have a privilege of these floors, right? So all of you guys will get the security key tag. So when you're coming in, just tag it. So it will automatically open. So that downstairs door is going to get closed and you will get a tag. So if you need to come in, Daniel will start to issue you these cards starting next week. So, and it will have an expiry. So he will figure out when to, I don't control who sits here. This is not my department, right? For how long you sit here, I could care less. Like, I need audience to talk to. If there's nobody here, I can't talk to anybody, right? But that's just being implemented very soon, because a couple of times the LWE members came here thinking this where they can learn, and we're like, no, if you're not paying up the full cost, there's a different office for that. So anyway, price is heading back in. It shot up huge, back up to, see, this is where the greed comes in. Greed comes in. I would ask you to suck you in to open up Ninja again one more time. Come on, before it breaks us one. Come on, open it up. Let's take a bit of a trade. I missed my S1 by the time. I would have sold from S1. It was bouncing back, but it's okay. I got a bit of a profit. S1 जब बाउंस किया ठीक है, क्योंकि नीचे से आ रही है तो रेजिस्टेंस है ना. There you go. I took that. I'm on micros and trailing close. Good enough. I just wanted to push my take profit above $200. Beautiful trade from. नहीं बाउंस नहीं, फिर निकल जाएगी. 2 दफा बाउंस हुई है, तो अगर आप एरिया वो कैंडल देखें 2 दफा उसमें गिरी है. S2 is no longer valid. From S2 it went to S1, top it came down, but
Please, S3. And then we will use S2 as a resistance, not as a support right now, because twice it has done. I'm just happy the market is actually moving the way it's supposed to. Unlike yesterday, we just chit-chat whole day. And so where's my number? मिड बैंड भी उस मार्केट में चलना है जिस दिन वॉल्यूम हो कोई कल तो बिल्कुल R1 R2 सब कुछ. All right, let me shut this thing down. I will see you guys. So tomorrow there's no Trinity Place, Trinity Drive Saturday presentation. That will resume from next Saturday. I know quite a few people are waiting there for me. I will get that taken care of. Indicators, price line 5. MBT, micros, MBT, good. Duplicate in micros, MET. Micro Bitcoin, micro Ethereum, silver, copper, 6B. I'll put forex at the end. 6B, 6C, natural gas, crude oil. So let's precious metal, put them together. Copper, silver, gold. And let's do natural gas and crude oil. Russell did not go to expected low yet. Dow did not go to expected low yet. Nasdaq did not go to expected low yet. And this. Let's save this for next time. And no. All right. Let me copy my workspaces so it doesn't. I don't have to do workspaces. February 7th. भाई विषय लाइट ऑन कर दो. Okay. Now you guys have any questions for me? This would be a good time for next half an hour if you have questions. ये डैनियल करेंगे. नहीं डेस्कटॉप पे. हाँ वो अच्छा उसमें सिर्फ ये फंडेड डालने हैं. ओ 1 मिनट का काम है. जब घर पहुंचे मुझे एनी डेस्क पे मैं कर दूं. हाँ ठीक है. हाँ वो मुझे दें ताकि मैं ट्रेड वेड करवा दूं. I'm going to close Zoom and you guys can join me on other platform.
just stay in it. शेयर आ रहा हो वही है ना जाके स्टोर नहीं होगा What currency? What? वो तो स्क्रीन ऑन Yeah, Only currency on that's the a planet which is not. God is unpredictable. that's a first one for me. A GC God's currency. What about crude oil, man? Crude oil is extracted and used That's for commercial. dinosaur. That's a dinosaur currency. Because So it's like in GC, it's like unpredictable. All of a sudden. आपको ये नहीं देना आपको ये काला रिवर्स नहीं देना ट्रेंड चेंज हुआ टेक सेल फ्रॉम द फर्स्ट रिवर्स सी गवर्नमेंट बैंक को टच करके ठीक है हाँ जी मुझे व्हाट्सएप करें मैं अभी रैप अप करके करता हूँ ओके just 2 minutes just gotta wrap it up for tomorrow सिर्फ 2 minutes दे दें just gotta make sure tomorrow because he's gonna teach tomorrow so I gotta make sure that because I used to work in my teenager days pizza store and they used to say, hey, for the next shift you gotta make sure everything is clean, right? So the habit of, because he's gonna take the lectures tomorrow, right? I want to make sure that I am not in his way for tomorrow. So time to take my little, so this I will like put it up tomorrow. Mic not required for this tomorrow. All right, let me shut it down. What a beautiful trade from S1 as a support. Might take profit. Apex done. This time definitely shutting it down. Price is 20 points ahead. What does that mean? Right now the price should be the price for every. Just make sure in Trading View and CME you're watching live. All right. Give me a sir. Any desk please number. body number 1129 Yep. 680 Okay. 480 Okay. Yes. accept करें Accept. So make sure accept and yes and yes. I'm in. I'm in. So sir, मैं दसना कि मैं इधरों ट्रेडिंग एड उन्होंने एनी डेस्क की बंद कर देता है. So let's retry. ये देख लो. So keep any desk open. कुछ नहीं करना Press accept again. yes All right. So, okay. Exit. It's trading एड खुला just wait Can they click this previous session? Click on this. ऊपर previous session हैगा उन्हें उसका लिखा होना जितनी कर्सर click on it. हाँ previous session Full access. थल्ले full access में click करें yeah Yes. All right. So now I will minimize this. ठीक. अच्छा इतने पहले करना है. गूगल पे नहीं लेकिन निंजा भी करना है.
हाँ जी ओके एक सेकंड इन्हों मल्टी प्रोवाइडर ऑन कर दी ये देखो लेजेंड्स से खुले हैं ये है ठीक है हाँ जी अपना 112 वाला करना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ओके सो नहीं वो तो लेजेंड तक कोई भी हो जाएगा अगेन जा इत्थे लिख दियो माय लेजेंड्स ठीक है इत्थे ਅਸੀਂ ਚੇਰਾਂਗੇ ट्रेड ऑफ इट पासवर्ड मैनेजर लॉग आउट करता हूँ हो गया सर आगे डन दोनों आ गए ਟੂਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ठीक डन हो गया इन्हों मैं सेव कर देना एक सेकंड ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ हाँ जी हूँ तो उधर ट्रेड लाओगे इधर भी पोजीशन लग जाएगी ਅੱਛਾ सेम हो गया आई हैव लॉक्ड आउट हाँ जी ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ हाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ठीक है सो मैं इन्हें लेजेंड आपको बिल्कुल दे सकते हो नो प्रॉब्लम अगर मेरा बेटा मेरे तो ट्रेड का कॉपी सीखता है नो प्रॉब्लम अपना देना नहीं तो ना ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਦੇ देखो फिर ਉਹਦੇ 50 ਲਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸੋਈਓ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਿੰਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਦਾ ਦਿਓ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ $50 ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਲੈ ਦਿਓ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਜਾ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ no problem all right let's shut it I assume nobody has any questions for me so I gotta go जा रही है फिर आप कहते हैं मैं कंप्यूटर खोल लूं फिर अच्छा फिर खोल लेता हूँ कंप्यूटर अभी ओके ठीक है पाँच मिनट का वेट तो लिखिए 5 मिनट का वेट है 5 मिनट तो बाद हाँ जी नहीं फिर एक एक का लॉगिन करना होता है या अपेक्स में लॉगिन करेंगे या ट्रेडोवेट में या टिक में या ट्रेडिफाई में उनका हर एक अपना यूजर नेम पासवर्ड होता है लेजेंड्स का यूजर नेम पासवर्ड लेजेंड की वेबसाइट से मिलेगा आपको हाँ जी यस तो हर एक कंपनी आपको ट्रेडोवेट का अपना यूजर नेम पासवर्ड देगी तो अगर आप जैसे मैं करता हूँ ट्रेडिफाई टिक ट्रेडर लेजेंड्स टेक प्रॉफिट तो मैंने 4 ब्राउजर खोले हुए हैं
एक फायरफॉक्स खोला हुआ है, क्रोम खोला हुआ है, एक एज खोला हुआ है, एक सफारी खोला हुआ है। तो क्योंकि मुझे सारे ट्रेडोवर्ड देखने हैं या कोई फोन पे खोला हुआ है, तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 से ज्यादा कंपनीज इकट्ठे ना मिक्स करूं, इट कैन गो डाउन प्रीटी फास्ट। तो अभी भी S2 पे तो आपका टेक प्रॉफिट, कोई भी न्यूज ट्रेडिंग नहीं करने देता। मेजोरिटी पीए में वो कहते हैं भाई क्योंकि आपकी हैबिट ना खराब हो। अगर वो तो हर वक्त 10 पे है, 10 15 पे है, 10 30 पे है, वो किस न्यूज़ को कंसीडर करते हैं? नहीं, मेजोरिटी कहते हैं रेड न्यूज, और 5 रेड में जितनी रेड है ना उसको छोड़ दें और 5 मिनट वेट कर। ये भी अच्छी हैबिट है। ये देखे ना आज उसने न्यूज़ में क्या किया। ओ सर, कौन सा ये तो वो जो डेमो था ये कंपनी माइक्रो में ये नो प्रॉब्लम। अब देखिए मुझे ईमेल आई है टेक प्रॉफिट की, कह रहा भाई 12 फरवरी को सुबह 8:30 बजे सीपीआई है, ट्रेड ना करना। हम कोई उसका ये टेक प्रॉफिट की ईमेल आई है, बड़े स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। टेक प्रॉफिट, लेजेंड्स, एपेक्स डजंट केयर, एपेक्स कहता है अकाउंट हटाओ, लेकिन अभी इनकी ईमेल आई कि 12 फरवरी को 8 बजे सुबह न्यूज आनी है सीपीआई की, प्लीज ट्रेड ना करना, ये प्रो अकाउंट। तो why they don't provide this? Okay. नहीं, उनकी वेबसाइट है, उनके वेबसाइट पे सारी ये मेजोरिटी जब लिखा वर्ड न्यूज आ जाता है ना तो वो रेड इम्पैक्ट को पकड़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म, सीपीआई, एफओएमसी। नो जनरली न्यूज, वो जनरल न्यूज यही कहते आप ये लो इम्पैक्ट में ना किसी को परवाह नहीं होगी। ये जो आज आया एकदम, कोई निकल गया ट्रेड से, कोई नहीं निकला, राइट? सो high impact is where they are after, because what happens is with high impact today, if anybody, I was driving, I recorded it, I'll post it at 8:30. You should see the spike that happened. It went from the price to 960 and came down to 850. So 140 points is a big, so they don't want you to trade the news, right? So अभी तो सही जो है ना फ्राइडे का कत्लो गारत हो रही है, ड्रिप डाइवर्जेंस इतनी है, तो लेट्स सी इफ इट गोस टू एक्सट्रीम लो टुडे। That would be, so far the market has gone down from 967 Nasdaq to 615, so 325 move, and ES has done is almost 70 points move, so from 6123 6052 below S2. प्रेशर का बहुत बड़ा है। ये प्रेशर होता है कि ये प्रेशर होता है कि किसी भी वक्त टूट जाएगी। अब ये 10 दिनों से चल रहा था प्रेशर, ये प्रेशर अब पता कब होगा, जब 240 1440 के चार्ट से नीचे गिर जाएगी ना ट्रेंड बैंड से, अब फिर वो प्रेशर ऊपर का शुरू हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट बाइंग। सो दिस इज जस्ट अ साइंटिफिक मैथमेटिक गेम। So 30-20 divergence, guys. Yes. 240 के मिड बैंड में बैठी है। हाँ जी, हाँ जी सर, अगर बड़ा एनालिसिस मैं आपको कर देता हूँ, 1 मिनट का काम लगेगा। प्लस ये नहीं, मैं हर एक चार्ट का ना उसका So let's look at ES 1440. We still have until 6023 to decide. It's a deciding number, 6023. And let's keep looking at the strike price. The strike price for ES is 20. Yeah, so 1440 का चार्ट कह रहा है कि 6023 तक
इसको पहले टेस्ट होना चाहिए. And which is our strike price approximately 6020. That's the 1440 midband on a daily chart. So after 6020, trend may change. So Nasdaq में पहुंच रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं. पहले मैं अगला 60 मिनट में पहले अगली सपोर्ट देखते हैं. पहले ये तो आ गई आपका 60 मिनट का तो बैंड एक्सट्रीम एक्सपेक्टेड लो के करीब है, वो तो आज ही आ जाएगा. Let's look at next chart is 240 minute. It has gone below it, so we are waiting for yeah, trend should change if it next candle opens below 6066. So that's the number to watch. What is happening in 30 minutes, I really don't care. I don't care. Let's look at Nasdaq. So अगर आपके पास FTMO है, तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि Nasdaq में लॉन्ग कहां से जाना है. मैं एक मिनट सिर्फ 1440 का चार्ट. सारे लेकिन वन टाइम ये वन टाइम पीए 20,150. अगर Nasdaq 20,150 पे आ गई ना, so it should be a good buy. अभी तो Nasdaq के पास पूरा मिड बैंड पड़ा है 21,450 तक. 21,450 तक डेली नहीं चेंज होगा. 21,450 तक ना, वहां तक अभी सपोर्ट बनती है डेली की. अच्छा, ये इसका 30 मिनट का मैजिक मैन ट्विस्ट हो रहा है. ES में लेकिन 20 बनेगा उसका. क्या प्राइस चल रही है अभी? नहीं, आपका मिड बैंड होना चाहिए सर 1440 का 20. ये जो प्री कॉन्फ़िगर्ड चार्ट है ना, वो आपकी बन रही है सर अभी पीपी पे बैठी है 6020 तक, तो 1440 के मिड बैंड पे. वीक हाई, वीक लो, वीक कल आपको कैसे से कम नहीं नोट तो बनाओ, लेकिन
लाइव तो मिल नहीं सकता। सिमुलेशन दो तरह के होते हैं, एक सिमुलेशन होता है आप ट्रेड कर रहे हो लाइव, दूसरा सिमुलेशन होता है कि the system calculates things by itself and gives you different outcomes. वो भी सिमुलेशन है। All right, so let me wrap it up. See you guys and tomorrow. Sunday को राहुल भाई आराम से आना because a lot of snow on Saturday. फिर मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और क्या, आना तो टाइम पे ही है ना, जब आपने कहा ना आराम से। The largest, highest amount of snow on Saturday night of the season. वाह, Saturday night. कनाडा में ये तो कह नहीं सकते कि भाई शवलिंग डे। यस, कल आप नहीं थे, मार्केट इतनी ठंडी पड़ी हुई थी। अब आप देखें ना, आज आए हैं तो नॉन फॉर्मल दिन है। हाँ, कल मैं सारा दिन बिटकॉइन में बैठा हुआ था। अच्छा, चल रही थी बिटकॉइन मूव हुआ बिटकॉइन शॉर्ट में बंद है क्योंकि बहुत ओवरबॉट है ना, तो उन्होंने बताया हुआ 47,000 पे बाय करना है। अच्छा, फिर वो जाएगी $2.5 लाख पे। JCAI अभी बना नहीं। बिटकॉइन अगर किसी ने लेना 47,000 नंबर है, जब गिरेगा ना, गिरने दें 47,000 पे आएगा ना, तो पीछे 2,000 का ले लीजिएगा, उसने 2.5 लाख पे जाना है, लेकिन 47,000 से पहले ना बाई कीजिएगा। 47 के बाद अगर नहीं, आई विश, अभी तो 1,50,000 का है, तो 47 गुड बाय बनता है। जो उसने लेनी है ना रिट्रेस, 47 पे बाय बनेगी। अभी तो 1 लाख का है, और नहीं, ये मिलियन तक जाना है, ये शायद 20-25 साल में जाए, डिपेंड करता है। लेकिन उसकी जो स्विंग्स आ रही है ना, वो 47,000 एक गुड सपोर्ट है, और फिर इसने जाएंगे 2.5 लाख अगली। अभी आपने ले लिया तो आप पहले तो उसको होल्ड करेंगे माइनस तक, तो ये है ना, हाई पे खरीद लिया तो वो उसकी बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो सपोर्ट 47,000 है, और JCI हम सारे वेट कर रहे हैं। मैं हाँ, जब वो आएगा 500 का 1000 का लेके रख लें, और आप JC कॉइन का नाम है JCAI, क्रिप्टो कॉइन, जापानीज क्रिप्टो AI कॉइन is what we are all waiting। 500 का ले लें, 200 का है सर, आइए तो 0000, आइए तो पब्लिक आ जाए, पब्लिक है। हाँ, तो वो भी पब्लिक आ जाए, नहीं, जापानीज क्रिप्टो, तो ये बिटकॉइन कल पे है, तो ये अब लेट्स से आप 500 डाल दें, और आपने ले लिया 1000 टोकन, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर जितने का भी हुआ, 50 सेंट का हुआ, लेट्स से आपने हमारी जिंदगी इतनी, मैं शायद अपने वो जिसे कहते हैं 20 साल 25 साल बाद देख लूं कि शायद उसकी वैल्यू बिटकॉइन जैसी हो जाए। जब इस पे हमारी नजर है, तो जिन्होंने पहली वेव मिस कर दी, अब मुझे आज भी याद है, बिटकॉइन हम नए थे, लाइक रुल रहे थे, बिटकॉइन रुल रहे थे। 500 किसी वैसे दोस्त यार एक दूसरे को 500,000 भेज रहे थे, अगर अपना वाला या क्योंकि 1000 का वैल्यू 10 डॉलर को तो था वो, यार 10 से 12 हो गया, बेच तो निकाल लो, बेच तो न्यूटन है, कॉइन बेरी है, ये सारे लीगल है। नहीं, देखिए उस वक्त ये सारी, जिस तरह इंटरनेट है, .com बबल है, तो हमेशा मैंने अगर प्रॉफिट लिया ना, मैं परसेंटेज पे लिया है। क्रैकन ब्लॉकचेन नहीं बन हुई, बाइनेंस बन हुई है कनाडा में, बाइनेंस बन हुई है, ब्लॉकचेन नहीं। ब्लॉकचेन तो बहुत, एक तो वॉलेट है ना वो, फिर आप उसको करें कॉइन बेस में, अगर $200-300 के हैं तो फिर ठीक है, तो
ठीक है ना? हाँ, तो बढ़ गया होगा ना। हाँ, एक टाइम पे। हाँ, अब 1 लाख का है ना। ठीक। तो अब ये जब आता है तो ये आपकी जनरेशनल वेल्थ बनाएगा 20-30 साल बाद। ये ऐसे नहीं है कि सुबह उठे और आपके पास है। अच्छी बात है। नहीं, मैंने भी लेता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जैसे कि 1000 का था, 1000 से वो 1500 क्या हुआ, निकाल लिए पैसे के यार, क्योंकि इतना लंबा कौन बैठता है। मैंने अभी वो पिछले दिन लिए थे $5000 के, ठीक है। अभी मैं लॉग इन करूंगा, वो कोई 17000 ही बना हुआ है। अब वो मैं उसको सेल करूंगा तो ये नहीं है कि मैं 5000 से 50000 निकालना है। साथ अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते रहे, बाकी चलता रहे। I still gotta check how much is my Bitcoin. मैं वॉलेट में लॉग इन नहीं किया, बड़ा अरसा हो गया। blockchain.info 47,000 रुपये मैंने ब्लॉकचेन में के अंदर रखा हुआ है। थोड़े से तो आए यार, इतना कौन सा बड़ा। But I have dual authentication. Let me log in. ये अभी शो कर रहा है 10,273। जब ये ऊपर गया था ना थोड़ा सा, तो अभी 10,273 शो किया। ये 5000 के थे। अब मैंने जब 5 के खरीदे थे $1000 के यूएस, तो ये 10 हो गया, डबल हो गया, राइट। अब मैं 5 बेच दूंगा और 5 पड़े रहेंगे। That's it. तो ये प्रिंसिपल निकाल लिया, थोड़ा सा 1000 ऊपर निकाल लिया। नहीं 5 बिटकॉइन। ये देखिए ना, ये मैं ब्लॉकचेन पे इस तरह रखा 10,273 के, ये पड़े हुए हैं। तो 5000 के खरीदे थे, $5000 के, तो ये डबल हो चुका है इन अ मैटर ऑफ। ये सारा काम हुआ है जब ये कोई था ना 80-90 हजार पे। तो अगर आप चाहते हो तो इसको, और मैंने इसको 17 भी देखा है किसी टाइम पे, निकले नहीं। No, this is one of those things। वो XRP लिए थे 70-80 सेंट पे, वो 116 पे निकल गया, राइट। तो क्रिप्टो मेरी वो डेली की चीज नहीं है ना। Let's cash it. Might as well cash this $10,000 Bitcoin. Coinbase wallet. क्योंकि Coinbase में फायदा आपको ई ट्रांसफर आ जाता है। अभी ये बिटकॉइन भेजूंगा Coinbase में, Coinbase से ई ट्रांसफर ले लूंगा। Let's send this to my thingy. असल मजा फ्यूचर्स का है, सारी चीजें उससे पीछे है, क्योंकि बाकी स्लो ग्रोथ होती है। इसमें आप गए, आपने एक ट्रेड डाला, $400 लिए, बाहर आ गए, 200 लिए, 300 लिए। तो ऑप्शंस होते हैं कि आपने स्टॉक्स नहीं बाय करने, लेकिन आप भी काइंड ऑफ फ्यूचर्स ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म है। इस वक्त अगर आपने कोई भी स्टॉक उठा लें, नैस्डैक कहता हूँ, एनवीडिया, टेस्ला, आप ये प्रेडिक्ट करें कि इसने ऊपर जाना है या नीचे, ठीक है, और उसकी एक्सपायरी सेट कर लें कि कब तक। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं और हम 10 सेकंड से लेकर 10 मिनट्स तक ट्रेड में रहते हैं। आपने मिड बैंड पे प्राइस थी 6055, वहां से कॉन्ट्रैक्ट पिक कर लिया, वो प्राइस चली गई 57, कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, 2 पॉइंट के डिफरेंस से आपको $100 जेब में आ गए। ऑप्शंस में यह है कि हम एनालाइज करते रहते हैं। जिस दिन एनवीडिया क्रैश हुआ और 118 पे आया, मैंने एनवीडिया के 5 ऑप्शंस वेल्थ सिंपल पे जाके ऑर्डर रात को लगा दिया था कि इसने अगली एक्सपायरी से पहले 130 का हो जाए। वो पता नहीं रात को क्या जेन में आया, मैंने कहा यार शायद और ना गिर जाए, तो मैं कल परसों लेता हूँ। सुबह उठने से पहले वो 118 से 129 पे चला गया था। आई कुड हैव ट्रिपल्ड माय मनी। तो उसमें अगर तो एक्सपायरी में आपके चेंज नहीं होती प्राइस में, तो फिर आपको नुकसान होता है, लेकिन यू डोंट ओन द अंडरलाइन एसेट फॉर इट, राइट। सो नहीं, वो इन एंड आउट इस तरह नहीं है, वो आपको लंबा रखना है। एटलीस्ट पोजीशन है, एटलीस्ट 1 वीक की एक्सपायरी तो रखें ना। जितनी दूर एक्सपायरी रखेंगे, आपने आज लिया स्टॉक्स में यह है कि इस वक्त लेट्स से एनवीडिया चल रहा है 130 का, एक एग्जांपल देते हैं, आपके पास आपने 100 स्टॉक खरीदे,
13,000 डॉलर का। अब आपने लॉन्ग, आपकी RESP है, TFS है, तो क्योंकि ये दोनों उस वक्त ट्रेड हो सकते हैं जब आपने स्टॉक को 3 माह होल्ड करना हो, क्योंकि अगर आप 3 माह से पहले कनाडा में, या उसकी एक लिमिट है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उससे पहले निकाल देंगे वो डे ट्रेडिंग में आ जाती है। तो अगर आप 3 माह से ऊपर हैं और टेफ्सा में लगे हुए हैं तो उसमें कैपिटल गेन उस तरह नहीं है। आपने जो भी TFSA में डाले हैं और उसको लंबा छोड़ा हुआ है, 1 साल 2 साल, वो 130 पे लिया, वो 600 पे चला गया, गुड। अब वो जिस तरह आपकी वो क्लाइंट हैं, वो टेस्ला करती हैं, लाइक सिर्फ मसला ये फाइट ये हो रही है भाई टैक्स कितना पे करना है, उसकी प्रॉब्लम ये है वो सर पकड़ के बैठे रहती है भाई टैक्स बढ़े, क्योंकि एक्सपेंस है नहीं। कमाते हैं वो महीने के लिए कमा के सर पकड़ के बैठे नहीं, अभी मैं ओवर हियर कर रहा था कन्वर्सेशन, 2.5 लाख के ऊपर जो टैक्स है उसकी डिबेट हो रही थी आपके साथ कि मुझे टैक्स, क्योंकि देखिए एक्सपेंस नहीं है ना, स्विंग शुरू हो गए, फिर खोल लइए कंप्यूटर। सर हुणी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ठीक है बफे। ये हो रही है अपने वॉलेट नहीं नहीं, मैं एक्सपेक्टेड लो से पहले नहीं एंटर कर रहा, या R2 पे अपना एरिया से तो लेकिन मेरा ख्याल है वो डे ट्रेड स्टॉक्स में कर रही है ना। ओके, that's okay. See you guys.